औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदा के लिए जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, और दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दोस्तों, मैंने आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले कहा था कि ये ऑपरेशन शुरू होने वाला है और ये वॉर शुरू होने वाली है, और 1 हफ्ता पहले मैंने एक बात कही थी कि अमेरिका अब ये बहुत से फोक फ्लैग्स जो है ना, ये करना शुरू कर रहे, ऑपरेशन करने शुरू करेंगे। ठीक है, ये फॉक्स फ्लैग्स जो है ना हर बार ये करते हैं। 9/11 इन्होंने किया, ठीक है, 7/7 इन्होंने किया, अफगानिस्तान पे, इराक पे, लीबिया, आप देखते जाएं जितने रजीम चेंज हुए ये टोटल। अब देखें आज की जो मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें वो क्या कह रहा है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, ये जो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मुझे एडवाइस किया था कि जी आप ईरान, इससे पहले कि ईरान अटैक करे आप जल्दी से अटैक कर दो। ठीक है, अभी मैं इसी के साथ एक वीडियो अटैच करूंगा, आप देखें कि जो बड़े बड़े तबसरा करने वाले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका, इंग्लैंड, उनकी इंफॉर्मेशन सुने, और मोसाद की जो कार्रवाइयाँ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें कि मोसाद कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। और स्पेशल 5th जनरेशन वॉर इन्होंने नेट के ऊपर ऑन की हुई है। और दूसरा जो सिपाही यजीद है ना पाकिस्तान के अंदर, ख्वारजी मुल्ला हैं जो, ठीक है, नासबी मुल्ला, वो भी एक्टिवेट इन्होंने कर दिए, क्योंकि जो मुल्ला वहाँ से नाश्ता करके आया था ना, उसको उन्होंने मिशन दिया था कि बाकी सारे मुल्लाओं को तूने वहाँ इकट्ठा करना है, डॉलर पेमेंट होगी, जो पेमेंट होगी अब डॉलरों में होगी, रियाल नहीं आएंगे, डॉलर आएंगे। तो वो भी एक्टिवेट हो गए। अब पाकिस्तानी मीडिया तो वैसे बिका हुआ था ही था, क्योंकि पाकिस्तान का जो मीडिया वो दजाली मीडिया है, वो तो बिका हुआ है। उसके अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, फौज तो वैसे भी उनके तलवे चाटती है हमारी, वो जर्नल जो बड़े बड़े जर्नल हैं वहाँ जाके वैसे ही लेट जाते हैं नीचे अमेरिका के। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो पूछे ही ना, वो तो पहले ही से ही लेटी हुई है, वो करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट सिस्टम है वहाँ पे। तो अभी वीडियो आप देखें, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई। अभी मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो इसी की वीडियो के साथ अटैच करता हूँ, इंशाल्लाह 2 मिनट की वीडियो, और आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस वीडियो। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। That there's going to be a false flag attack, another 9/11 that's going to unite the people to support this war. It's going to happen in Europe. It's going to happen in America. And you're seeing all the stuff, the anti-Muslim, anti-Islamic stuff coming out. Get ready for the 9th crusade. That's what they're going to turn it into, and the people will buy it. Watch out for the false flag. That's my greatest concern. They did it before, they'll do it again. How can you believe a country that has a very lucrative history of false flags operations? False flags operations. Wait a second, what is going on? First of all, you have the bombing of King David Hotel. King David Hotel. 92 British soldiers were killed, and the people who did it were people from the Haganah gang, and they were dressed as Palestinians. And then 1994, the bombing of the Israeli embassy in London, it was done by Mossad. Mossad had bombed their own embassy. Oh. And then they nailed 2 Palestinians for it. 2 innocent Palestinians. Oh. 1 month after 9/11, which is the biggest false flag operation, in October 2001, there was an attack of the Mexican parliament by 2 Mossad individuals, and they were also pretending to be Palestinians. Wow. But they were discovered before the bombing. Twice. There's many of them. How can you believe a country that has a very lucrative history of false flags operations? That is not normal. So in case, God forbid, Al-Aqsa Mosque got hit by an Iranian missile, remember this. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. And all the Arabs will go against Iran, and will be the end of the problem. You know? You make them fight with each other. Wake up, Americans. You're about to be pulled into a war with Arabs, with the Muslim world. And you're going to be made to believe that something horrible that happened to you was done by the Muslims. But it wasn't done by the Muslims. It was done by a wild card, the Israeli Mossad, that's cunning and ruthless and can carry out attacks on Americans and make it look like Arabs did it. That's the literal definition of a false flag. They didn't write that. That's a false flag. If the world doesn't go along with Israel, especially in a situation where Israel felt that its existence as an apartheid Jewish state and crime base for the world's biggest banksters is ever threatened, then it will blow up the capitals of Europe as well as the Middle East, and implicitly they're also threatening the United States.
though they may not have missiles that can reach the United States, as I said, there are reports in the intelligence community that, in fact, Israel has planted miniature nuclear weapons in American cities. We'd be better off if there were no Israel. Get ready for a false flag event.